another weekend, another ride. Hey guys, what's up? This is this side from Autocops. I'm back again with another video. So guys, जो आज की वीडियो रहने वाली है ये रहने वाली है again another ride पे, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली दिया. And this ride is going to be with the group name Built on Bolts, and it is kind of a group which has really good people in it and which has amazing cars in it. Like मैंने जितनी लाइनअप देखी, I'm blown away. And simply इसमें ऐसी कार्स हैं जो मेरे ड्रीम गराज में I would like to add. So I would really request you guys to watch this video till the end because ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल गाड़ियों का नहीं है. आपको इसके अंदर कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं देखने को मिलेंगी. इट इज लाइक बहुत रेयर होगा. एंड एवरी कार दैट इज इन दिस ग्रुप इज रियली मॉडिफाइड टिल इट्स पीक आई शुड से. सो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं. मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है. और लाइक जरूर कर देना वीडियो को बिकॉज अगेन it is going to consist a lot of cars which are really just mind blowing. So without any further ado, let's get right into it. ओके गाइस, तो मैं आपको एक बारी फाइनल लाइनअप दिखा देता हूँ जो रहने वाली है इस मीटअप की. तो गाइज अभी हम ड्रैग स्टार्ट करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव ड्रैग रेसेस. अब कौन सी गाड़ी की किसके साथ होगी एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बिकॉज मैं अभी रोड पे हूँ एंड आई वोंट टेल यू विच रोड इज दिस. शायद आपको पता चली गया ऑलरेडी. सो स्टूपिड ऑफ मी टू से दैट. बट अगेन अभी ड्रैग रेसेस होने वाली है एंड आई मेक यू सी ऑल द कंटेंट एंड कौन कौन सी कार्स जीती हैं. आई मेक श्योर कि मैं लिख दूँ इफ आई वोंट बी एबल टू शो यू गाइज इन द वीडियो. सो अभी मैं दिखा देता हूँ ड्रैग रेसेस के लिए कौन कौन सी गाड़ी है. किया सेल्टोस ये ट्यून है and this is Change on Tune Pops and Mans. My car you already know about. Vento, this car I don't know, it's more or less a stock. Audi A4, it's bare stock. And here comes the Hyundai i20 line.
and there comes the BMW 330i, and ये मेरे दोनों फ्रेंड्स की क्रेटा and the Ignis, and this is also tuned. This is I think stage 2 tuned, like a very nice wrap, Nardo grey and a half partial black wrap. Carbon fiber है दो ये, not black. But if I move on to the last car, which is again Polo GT TSI, this is also Cops and Banks tuned, stage 1, and मैं इसका अभी रिव्यू डाल दूँगा. And this is something, okay, he is my friend. Hi guys, सब्सक्राइब करो भाई का चैनल, बहुत बढ़िया है. देखो आज बहुत क्रेजी सीन्स कर रखे हैं हम लोगों ने. Thank you so much bro for that, and I hope आपको ये कंटेंट अच्छा लगे. And this one last shot of this particular BMW which looks really sick, and this is something which, this is the car out of the whole fleet that I love the most. And personally saying, अब तक कोई cars है, अगर और ऐड होती हैं तो definitely I'll make sure I like tell you guys about कौन सी गाड़ियाँ ऐड ऑन होती हैं. So stick to the video till the end and like this video, because these cars are really gonna roar and like definitely defeat one another. And who will win the best and who will come first, I'll definitely show you guys. And just so guys you know, because ये एक हमारी मीडिया कार, काइंड ऑफ मीडिया कार रहने वाली है, just to record all the cars that are in the ride. कुछ गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं और कुछ राइडर्स पैराडाइज कैफे में. एंड सो हियर द हॉन्किंग कम्स, एंड आई थिंक दैट वाज एन RS5. यस, आई थिंक दैट वाज एन RS5, व्हिच आई थिंक इट वाज वेरी लाउड though. Now coming back to our cars, again you can hear that particular car again because it's very loud. We are going to plan to record all the cars when they will start rolling, and one of my friends is sitting at the back of that particular car. So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, and I'm really putting my heart and soul into it. Just make sure you like this video and subscribe to the channel. Okay, so guys, we have just finished the shooting of all these cars, like a mini photo shoot or rolling shots if you can say. And drag races, I know मैंने आपको बोला था कि drag races होंगी, but we are just planning, because some of them are not agreeing to do that, but at the same time let's see how it goes. So I'll keep you guys posted about that. A few moments later. और ये स्टेज 2 ट्यून करी हुई इसकी सेल्टॉस का व्लॉग बनाते हुए भाई साहब. बाद में इसमें कैनन OEM रिप्लेसमेंट, मतलब यानी कि स्टॉक रिप्लेसमेंट भी लगा हुआ है. और उसके अलावा हमने इसके अंदर अल्ट्रा रेसिंग का कुछ डलवाया है. बोरला का थंपर एग्जॉस्ट डलवाया हुआ है, फुल सिस्टम टू बी प्रिसाइज. स्टेज 2 है अपनी गाड़ी, और FMSCI की तरफ से भी कुछ इसमें लगवाई दिया था हमने. बहुत सारी चीजें. और बाकी हमारे ग्रुप में एक N लाइन भी है, जरूर चेक करो यार, पीछे एक बारी गो. The most expensive like I20 ever made, that is the I20 N line, and you can like know this car by the name of Blue Whip. शायद ये इसका Instagram handle, and you can search on Instagram and you will definitely find some really nice content related to this car. तो गाइज ड्रैग रेस तो नहीं हुई, बट ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज कुछ लोग अलग अलग हो चुके थे एंड सम ऑफ द पीपल वेंट अवे. सो दिस इज द लाइन अप. आई एम गोइंग टू लीव फॉर माई होम नाउ, एंड द नाडो ग्रे रैप्ड इग्निस इज हेयर. एक अवेंटो है, सिल्वर बॉडी कलर में है वो, एंड दिस इज एन ऑटो क्रॉस कार. इट इज़ वेरी पावरफुल. प्लस दिस इज माई फेवरेट Volkswagen Vento, sorry Polo, that I have ever seen. It is on Lenso wheels, तो like और लोड भी है कार, आई बैक लोडिंग स्प्रिंग से. एंड द माइटी एंड the favorite car of every guy, that is the Skoda Laura VRS. इसकी मॉड की लिस्ट अगर मैंने यहाँ डाल दी तो आप लोग हैरान हो जाओगे यहाँ इस पर क्या क्या हो रखा है. बट अगेन आई ट्राई टू पुट ऑल द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार की इसके अंदर क्या क्या हो रखा है, एंड यू विल बी ब्लोन अवे बाय द फैक्ट कि गाड़ी like it is around 350 horsepower, and 350 horsepower, I kid you not, is not a small number. For VRS it is definitely not a small number. तो guys like
the ride is over and I'm heading back to my home now. So again, as I always say at the end of the every ride, like I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, then you know what you have to do. These cars were amazing, and some of these cars, like I have requested some of like few of the owners कि I like can I have the permission to shoot their cars, but कुछ गाड़ियों में तो तेरे मोड्स रखेंगे, मेरे को खुद ही नहीं आइडिया कि मैं आप लोगों को क्या समझाऊं, because I am not someone who has the complete knowledge of like tuner world of automobiles. So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, and I'll keep bringing you videos like this about all these fun weekend rides. So make sure आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, and आपको एक डेली अप टू डेट जिसे कहते हैं ना एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. So until next time, bye bye.